We'll go to the system. Today we are going to start with the strategy. Before that, let me just revise the things whatever we have learned. So right in front of us, there is a index chart. This is a quarterly time frame of the Nifty where we can see the last quarter the price is above the short average above the mid average, Yes. MACD above signal line, and RSI just below the signal line. In this. Okay. Yes. So in our last topic, we have seen 4 basic bullish conditions. In that, we want everything above the signal line. That will be the best for us. So we'll select a stock where it is matching to all the conditions. So now if we see the Shree Cement here in the quarterly time frame, we can see that prices closing above the E6, E6 above E30, MACD above single line, and RSI is also above single line. So this kind of stock we will be calling it as a bullish stocks, right? It is a Okay. bullish, right? In the weekly, if we go, we can see as per the last week, it is showing us that it is a short-term bearish trend in the weekly time frame. Yes. Right? It is a short-term bearish trend in the weekly time frame. And if we go to the daily time frame here, just a moment. In the daily, as per the yesterday's time frame, we can see it is a bearish. E6 below E30, price has closed below E6, MACD below signal line, and RSI is also below signal. Right? Yes. Just a moment. So we have seen 4 basic bullish conditions. First is price above E6, 6 above E30, MACD above Yes. signal line, and RSI above. If your chart is meeting to all these bullish conditions, we will consider that stock is for the buying, right? And Yes. vice versa is 4 basic bearish conditions. Price below
E6 E6 below E30 MACD below signal line RSI below. So if your stock is falling under these conditions, we will be calling it that the stock is for the short selling and not for the buying, right? Yes. Just copy paste the thing. So, ma'am, today we are going to learn a strategy based on the weekly bullish time frames, where we will try to take a buy looking at the weekly bullishness. Okay. तो जब भी हाइयर चार्ट बुलिश होगा तो हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, और अगर हाइयर चार्ट बेरिश होगा तो हम लोग सेलिंग के बारे में, राइट? हाँ जी सर. अभी हाइयर चार्ट को डिसाइड कैसे करना है, इट इज टोटली अपॉन यू दैट विच काइंड ऑफ ट्रेड यू वांट टू डू. If you want to do intraday, that means the daily is your higher chart. Yes. And if you want to do, let's say, positional for 1 or 2 weeks, then the weekly will be your higher chart. So let's start now. Now, in this, our holding period will be 1 to 2 weeks. We have to select the stocks which are quarterly and monthly bullish. With MACD. And in that stock, we will check the weekly condition. So even for weekly, we'll see quarterly and monthly that they are in the bullish Yeah, trend. because now, ma'am, you are beginning. So for the beginning, we don't want to create any obstacles Okay, sir. or any accidents. So let's assume that if the quarterly is bearish, हाँ जी. right?
and you have just selected the stock looking at the weekly time frame. So there are a Yes. chances that bearishness can take down the weekly even if it is a bullish looking chart, right? Okay. So Hmm. in the beginning, we will take care of everything so that there'll be no accidents will happen in trading. जी sir. Because अगर quarterly monthly वो bearish में है, so chances है कि it can happen weekly में Correct. भी. So basically, the concept is that quarterly, monthly, these are the investors' time frames, right? Those who want to hold the stock for a longer time frame, longer period, they will see how the quarterly and the monthly trends are. If any stock is in the bullish trend in the quarterly and monthly, that means the investors are still in that stock, right? Whereas the weekly and daily, these are the swing charts, right? Anyone want to take intraday positions, he will look after the daily time frames. Anyone want to take a swing positions, he will look at after the weekly time frames. Okay, so the it is called as the secondary charts, and the quarterly monthly are the primary charts, primary trends it shows. So primary trends are for the investors where the big money is lying, and the secondary trends run in between the primary trend. I will explain you in the charts. Okay, Okay sir. first we'll see the weekly conditions. What are the weekly conditions should be there? Price trading here, weekly E6 level. So as we have learned that the moving averages will act as a supports in the bullish trend. So we want the price to be trading near the support and not away from the support. Yes. Secondly, E6 above E30. Third is MACD above single line. And the last is RSI above single line. पर अगर मैं quarterly या monthly trend करती तो फिर Hmm. मैं क्या देखती? So the same conditions you will look in the quarterly chart, and for the entry you will be using the weekly chart. Okay, so that also we will see Okay. step by step. We'll see, so entire thing you'll come to know how we supposed to check. Okay, so right now I'll be going on the charts and looking for the stocks which are so one side I'll put a quarterly and another side I'll put a monthly. So Shriram, if you can see, it is a quarterly bullish and monthly as well as bullish, but weekly it is a week. So we won't be taking this because the MACD is down over here. So it is showing a weakness to us if the MACD is down in the weekly time. Hmm. So in this stock, you can see the monthly trends are bullish, quarterly trends are also bullish in this, right? And the weekly, if we can see, it is a weekly right now, trading near the weekly support levels. So we want to select the stocks like this, which are trading near the weekly support level.
So whenever the index are weak as per the weekly time frame, we'll get a very less stocks which are weekly bullish. Right now, the Nifty is weak as per the weekly time frame, and that is why we are not getting much of the stocks falling as per this combination. I'm not able to understand, sir. What did you say? I said that whenever the index is weekly weak, Okay. Okay. I got it. you go to the Nifty, you can see it is a weekly weakness is going on. Na? Here the Hmm. Nifty MACD is down in the Hmm. Nifty, I can right? see that. Hmm. And monthly also you can see the MACD is down in the Nifty. So Yeah. that is why we are not getting much of the stocks in the list. So in that case, what should we do? What time frame should we trade in? But we can short So sell them. we will, yeah. So whenever the index are weekly weak, so we will be taking a short selling trade. The moment Okay. index will become a weekly bullish, so we will be taking the buy trades as per the weekly. So always Okay. we will, before we start picking the list, we have to always check how the index are trading. As per Okay. that, we'll be taking. For a time being, we'll just take this Torrent Pharma. Hmm. We can see in the last month it is bullish as per the MACD Yes. is up. Here it was the price when it has come near the weekly support zones. Again today also it is coming near the weekly support zone. Hmm. Now we'll go and see how the quarterly charts. Quarterly also we can see the MACD is above, right? Yeah. So we have to select the stock like this. We are getting very less examples. That is why. So like this one we want, where the prices are trading near the weekly support level. MACD is above signal line. RSI is also, or if below signal line, it will be okay. But MACD must be above signal line. Quarterly Okay. and monthly, the MACD and the price should be in the bullish trend. Even if the RSI is below signal line, that is okay in the quarterly and monthly chart. No worries. Okay, sir. But in weekly, it should be a RSI also. Yeah. Okay. After looking at the weekly conditions, we will see that the one condition we have to observe in the daily chart as well, that the daily only one condition that E6 must be above E30. That is the only condition we have to see. So we'll go to the stock right now over here. And if we go to the daily time frame, I put the daily time frame, you will see that the daily E6 is above E30. Yeah. Can we see that the daily E6 is above E30 over here? Yes. So we want a stock where the daily E6 should be above E30.
So not about MACD and RSI. We'll No, not. no, nothing. Oh, Only the daily E6 above E30 condition we have to check. Weekly, it should be trading near the support zone, that is the E6 levels, and the MACD should be above signal line. If the RSI is below signal line, that is okay. But if the RSI is above signal line, that will be good for us. okay, sir. Now we'll go and see trade execution, how we supposed to execute the trade. So we will be executing the trade along with the H3 chart, right? H3, that is a 3-hour chart. Okay, sir. I'm writing the steps, how what we're supposed to see. Allow the price to come near the weekly E6 and daily E30 levels, and then check H3 chart. If in H3 price close above E6 with RSI sustain above signal line, then check H1 chart MACD buy signal. Stop loss recent low of H3 chart on close basis. Target previous weekly high. Note, if weekly RSI is below signal line, calculate targets using Fibonacci tool, that is 61% retracement of H3 fall. So step by step, I will explain you what Okay, we sir. need to do. So the moment price come to daily E30 over here, you can see the price has reached to daily E30 on the August 7th here, 6th August. It has reached what? It has reached to E30. Daily E30 and weekly E6. Can we see the price has reached to weekly E6 and daily E30? Correct. So we have to allow the price to first come near the weekly E6 and daily E30 level. Okay. After that, we will be going to check the H3 chart. H3, that means 180 minutes chart. Hmm. So on, if you can see here, that is the 8th August week, and when the daily the price has come over here, that is somewhere near 6th. See, this is the 6th of August, correct? Hmm. So now when I will scan the stock in the evening, I will come to know now in this stock the prices has come to daily 30 and weekly S6, right? The So price next, has come to E6 or E30 matlab? मतलब E6 और E30, मैम वीकली के E6 के पास प्राइस आना चाहिए और डेली के E30 के पास प्राइस आना चाहिए. ये आया है ना यहाँ पे. एक मिनट में फिर से लगा देता हूँ. यहाँ पे दिख रहा है आपको प्राइस E30 के पास ट्रेड कर रहा है डेली के, हाँ. और वीकली के E6 के पास ट्रेड कर रहा है. Hmm. तो वो समय हम लोग को अलर्ट हो जाना है कि अभी आपको S3 का चार्ट देखना शुरू करना है. अच्छा.
Okay. So then I will go to the H3 chart. The moment the prices start trading near these levels, हम लोग H3 के चार्ट के पास चले जाएंगे. Okay. And then we will allow the H3 to close above E6 with RSI. तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो आप देखोगे कि E6 है 3567, क्लोज है 3594, करेक्ट है, मतलब E6 के ऊपर बंद हो गया. RSI देखेंगे तो RSI 48.70 है. हाँ जी. और RSI का एवरेज जो है वो 38.11 है, मतलब RSI के भी साथ बंद हुआ. यस और नो? हाँ. करेक्ट. नाउ we will quickly go at the same time and check H1 में भी MACD ऊपर आया है क्या, राइट. ये भी हम लोग देख लेंगे. तो ये 7 अगस्त को अगर हम लोग देखेंगे कि 2 बजे के आसपास ये आया है. देखो टाइमिंग देखो, 3 बजे के आसपास ये आया है, करेक्ट. सो आई विल गो एंड चेक इन द H1 चार्ट कि MACD भी उस टाइम पे ऊपर आया है क्या. All this has happened on 7th of August. तो कैन वी से हियर आया है 3 बजे MACD, है ना. ये व्हाइट वाला लाइन है मैम, नीचे जो है ना ये व्हाइट वाला लाइन. So we can see over here the MACD has also came up, correct? Okay. So now we have to buy the stock at H1 H3 E6 levels. मतलब H3 के E6 को आइडेंटिफाई करके वहां पे बाय करना है. अभी H3 के E6 को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं आऊंगा. ओके. यहाँ पे E6 का लेवल कितना दिख रहा है मुझे, 3567. मतलब 3567 के पास जब भी प्राइस आई, ये देखिए नेक्स्ट डे आई है 3562, उसके नेक्स्ट डे भी आई 3558. यहाँ पे मुझे क्या करना है, बाय करना. ओके. और जो रिसेंट लो मारा है बाय देने से पहले जो लेटेस्ट लो है ये यही है प्राइस का, ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस. तो मेरा जो एंट्री है वो रहेगा 3567 के आसपास. जो मेरा स्टॉप लॉस है वो जो रिसेंट लो मारा है ये मेरा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस. अभी हम लोग ने बोला है कि टारगेट जो है वो आपको रखना है प्रीवियस वीकली हाई, करेक्ट है. ओके. अभी हम लोग देखेंगे ये जो बाई का साइन आया है, इट हैज हैपेंड, इट हैज केम ऑन 7th of August. 7th of August के आसपास ये बाइंग का साइन आया है यहाँ पे. तो प्रीवियस वीकली हाई मतलब ये हो गया प्रीवियस वीक, करेक्ट है. इसके हाई जो होंगे दैट विल बी अवर टारगेट. सो दैट इज अ 3787. ओके. तो हम लोग वो लेवल्स पे अपने टारगेट्स यहाँ पे सेट करेंगे. Right. So now this trade is still moving on. Right now, it has. We will see that how it goes. Okay. We will take few more examples. तो सबसे we will make it more clear. हम लोग को क्वार्टरली और मंथली के चार्ट्स देख के पुलिस स्टॉक को ढूंढना है, फिर जाना है वीकली के पास, ठीक है. तो ये प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. इसके लिए हमको क्या करना है, जैसे कोई भी मंथ खत्म हो गया, राइट, समझो कोई भी मंथ एंड हो गया, तो आपको वहां पे लेट्स से कि निफ्टी का 200 निफ्टी 200 के लिस्ट में आप चले गए और खाली क्वार्टरली और मंथली लगा के जो जो स्टॉक क्वार्टरली में और मंथली में बुलिश है उसका एक हम लोग को लिस्ट बना. सर आवाज कट रही है आपकी. राइट. जैसे कोई भी मंथ खत्म हो गया, ओके मैम, आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन. थैंक यू. जैसे कोई भी मंथ अगर खत्म हो गया, राइट, सो व्हाट आई विल डू एट द एंड ऑफ द मंथ, आई विल सिलेक्ट. जैसे मैंने यहाँ पे निफ्टी का FNO का लिस्ट लगाया है, यहाँ पे समवेयर 200 स्टॉक्स है इसमें, राइट.
तो मैं क्या करूंगा, एक जगह पे क्वार्टरली चार्ट लगा दूंगा और एक जगह पे आई विल पुट अ मंथली चार्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, कभी करना है ये मंथ एंड में, जैसे ठीक है। अभी मंथ एंड होने वाला है, अभी आज 26 है, राइट? जी। अभी अगस्त एंड होगा, तो वो जो भी एंड होगा उस दिन आपको जाना है, ये एफएनओ का लिस्ट निकालो और आपने इसको स्कैन कर देना है। ठीक है, इसको स्कैन करेंगे आप तो जैसे ये देखो, ये मिल रहा है एबी कैपिटल, जहाँ पे क्वार्टरली भी बुलिश और मंथली बुलिश है, राइट? तो मैंने इसका नाम लिख दिया। ऐसे मुझे समझो 20-25 स्टॉक मिल गए जिसके क्वार्टरली और मंथली बुलिश है, राइट? ओके, अभी फॉर द नेक्स्ट एंटायर मंथ मुझे और मार्केट में कुछ देखने का नहीं, जो भी है यही 20 स्टॉक के अंदर वीकली में जाना है और जहां पे वीकली E6 के पास प्राइस ट्रेड कर रहा है वहां पे हम लोग वीकली एसटी का स्ट्रेटेजी करेंगे। समझ में आ गया? तो जी सर। इससे क्या हो जाएगा कि हम लोग का जो प्रोसेस है वो फोकस्ड हो जाएगा, कि हम लोग ने मंथ के पहले ही एक लिस्ट बना के रखा हुआ है जिसको हम लोग हमारा मार्केट वॉच बोलेंगे, राइट? और उस मार्केट वॉच में हम लोग जाके देखेंगे कि भाई वीकली में विच स्टॉक्स आर ट्रेडिंग नियर द वीकली सपोर्ट लेवल्स, वीकली के E6 के पास कौन से स्टॉक्स है, और उसमें डेली में E6 बिलो E30 तो नहीं गया है ना, ये दो कंडीशंस देख लेंगे। और फिर उसमें हम लोग तो हार्डली आपको वो 20 में से 4-5 स्टॉक्स ऐसे मिलेंगे जिसमें वीकली में बुलिश है और E6 के पास है, तो वही 4-5 स्टॉक्स को आपको इस वीक में देखना है, बस जाके कुछ करना नहीं है। ओके, तो ये प्रोसेस को अगर हम लोग बराबर से फॉलो करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है। ये हम लोग देखते और भी एग्जांपल, अभी आज के दिन में एक आया था अभी ये एशियन पेंट्स मैंने लगाया है। So Asian Paints, can I say that this is a weekly bullish and today it is trading near the weekly 6 levels? Yes or no? Yes. और डेली में भी 30 के पास आ गया है। तो आज अभी मार्केट खत्म हो गया तो मैं मार्केट खत्म होने के बाद बैठूंगा और देखूंगा, अरे हाँ ये स्टॉक है जो अपने हिसाब से आ गया है, तो मैं फिर यहाँ पे जाके देखूंगा कि H3 में इसमें बाय आया है क्या। जब आप मार्केट खत्म होने के बाद में आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे H3 में अभी तक बाइंग आया नहीं है। H3 में बाइंग कैसे आता है? The price will close above the H3 E6 and the RSI will sustain above signal line, correct? दोनों हाँ, इसमें ऐसा आया नहीं, तो कल के लिए ये स्टॉक मेरे रडार में रहेगा। ओके, तो अभी 3 घंटे का बार कभी कभी बंद होता है, एक तो 12 बजे बंद होता है, दूसरा बंद होता है 3 बजे और तीसरा बंद होता है 3:30 बजे। 3:30? हाँ, 3:30, right? So these are the 3 times where I will just go and glance at the H3 chart. अगर 12 बजे ही बंद हो गया है ना, तो I can take my position over there. I will keep the stop loss below the recent low. Okay? और जो भी वीकली का जो भी हाई रहेगा that will be my target. So either you can put in the system, right? Or every day whenever the markets open in the morning you will put in the system. अगर वो दिन में आ जाता है तो ठीक है ना, राइट? तो अभी ये स्टॉक हम लोग ने ढूंढ के रखा है, अगर ये आ जाता है बाइंग में तो हम लोग देखेंगे। तो ऐसे ही मैं अभी हर एक लिस्ट को जैसे स्कैन करूंगा। अभी मैं अभी ये पूरा देख रहा हूँ, लेकिन नॉर्मली हम लोग कहाँ पे देखेंगे, जो भी लिस्ट आपने बना के रखा हुआ है एट द एंड ऑफ द मंथ। हाँ, जैसे आपने 20 स्टॉक्स का लिस्ट बना के रखा है समझो, तो उसी में जाके वो 20 स्टॉक में ही देखना है और कुछ देखना नहीं है अपने को मार्केट में क्या चल रहा है, और खाली इंडेक्स को देखना है कि इंडेक्स वेदर इट इज सपोर्टिंग टू योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग और नो, राइट? सो यू वांट टू टेक अ बाय बट द इंडेक्स इज वीक, तो वी कैन गो फॉर अ शॉर्ट सेलिंग। अभी शॉर्ट सेलिंग का स्ट्रैटेजी हम लोग ने सीखा नहीं है, तो जब भी सीखेंगे तो हम लोग के पास 4-5 स्ट्रैटेजी हो जाएगा।
इसमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है सर। सर ओके एक बार तो नोट्स दिखाएंगे, मेरे को एक चीज पढ़नी थी। हाँ, यस मैम, यस मैम। चाहिए H3 प्राइस क्लोज एंड H चार्ट डेली 30। सर इसमें आपने वो वाला पॉइंट नहीं लिखा है, तो ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि H3 में व्हेन द प्राइस इज नियर E30, यही बोला। एसपी में नहीं लिखा है मैम मैंने। नहीं आपने देखो, लिखा ही नहीं है वो, मुझे ये समझ आया। मैंने लिखा है अलाउ द प्राइस टू कम नियर द वीकली E6 एंड डेली E30 लिखा है मैंने मैम। हाँ पर आप राइट। अभी, हाँ जी, और बाय करने के लिए S3 के चार्ट में जाना है हम लोग। हाँ तो तो उस, बाय हम्म, करने के टाइम पे मैं S3 पे चला जाऊंगा हाँ और देखूंगा कि प्राइस क्लोज हुआ है क्या S3 में E6 के ऊपर। राइट। तो H3 प्राइस क्लोज अबव E6। ओके, हाँ, एंड RSI सस्टेन अबाउट सिग्नल लाइन। तो H3 में प्राइस शुड बी अबव E6। यस ठीक है, मैम, प्राइस जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर बंद हो जाएगा तब। बिल्कुल, तो वही हाँ, होता है, सपोर्ट है हमारा और वही है करेक्ट, ऐसा, करेक्ट। बिल्कुल वो दैट इज अ लॉजिक सिग्नल बेसिक। कि नाउ द प्राइजेस आर रिवर्सिंग। जो हाँ जी, डाउन डाउन में जा रहा था अभी वापस से उसके मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। दैट मीन्स द प्राइजेस आर रिवर्सिंग। दैट इज ठीक है। तो आप कौन सा स्टॉक बता रहे थे अभी, उसमें आप कह रहे थे अभी कि H3 में सिग्नल नहीं आया है। मैंने बोला एशियन पेंट्स। हाँ, तो एशियन पेंट्स में हम लोग ने पहले देख लिया कि पहले भाई प्राइस हैज कमिंग नियर द वीकली 6, राइट। हम्म, कीपिंग द वीकली MACD RSI सब उसका अप है। E6 अबाउ E30 भी है। यहाँ पे हम्म, डेली के E30 पे के पास आ गया देखो, राइट। हम्म। तो दोनों भी कंडीशन फुलफिल हो रहा है। वीकली के E6 के भी आ रहा है, डेली के E30 के पास भी आ रहा है, करेक्ट है। पर ये डेली के E30 के पास आ रहा है, ये हमें क्यों मतलब है, मेरे को नहीं समझ आ रही है बात। क्योंकि अगर डेली में E30 के पास नहीं आया है और उसके पहले ही अगर हम लोग ने कोई बाय लेने की कोशिश की तो हाँ, वहां पे हमारे SL जो है वो हिट हो सकते एसएल हैं। स्टॉप लॉस। हाँ, करेक्ट। तो हम लोग को ये देखना है कि हाई प्रोबेबिलिटी के सेटअप्स पे ही हम काम करें। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी अचीव करने के लिए ये भी एक डेली का कंडीशन अगर हम लोग देख लेंगे तो हमारा जो एक्यूरेसी होगा विनिंग का वो ज्यादा होगा। की जो प्राइस है वो E30 के पास है इन डेली, करेक्ट। E30 के पास बिलो लेवल्स भी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन डेली का E6 बिलो E30 नहीं चला जाना चाहिए बस। तो समझ गई मैं। ओके। ठीक है सर। और भी देखते हैं मैम थोड़ा। पर ये बात आपने पहले नहीं बताई थी ना, ये आज ही बता रहे हो आप स्ट्रैटेजी में ना? हाँ क्योंकि मैम, मैं समझ स्ट्रैटेजी। रही हूँ कि मतलब मेरे को क्या समझ नहीं आ रहा क्या इश्यू हो रहा है, क्योंकि मेरे को था कि बाइंग ट्रेंड में तो मतलब E6 अबव E30 और प्राइस ऊपर होना चाहिए, पर आप स्ट्रैटेजीज बता रहे हो कि एग्जैक्टली कैसे हो मार्केट, तो तो मैं अभी एंटर करूँ। स्ट्रैटेजी में मैं माइन्यूट थिंग्स बताऊंगा कि क्या हाँ क्या चीज और डिटेल में देखना है ना। वो तो ठीक हम है। लोग ट्रेंड समझ रहे थे खाली तभी कि हाँ कि ट्रेंड्स ये भी कैसे चीजें देखना होती हैं। है ना। अभी स्ट्रैटेजी में हम लोग और डिटेल में चीजों को समझेंगे कि ये भी चीज फर्क करती है। हाँ ठीक है सर, सॉरी मेरे को समझ नहीं आ रहा था, ठीक है।
most of the stocks are weak in the weekly. Okay, sir. तो सर ऐसा कुछ होता है क्या कि मतलब अगर ज्यादा मतलब अर्न करना है, ऑफ कोर्स इन्वेस्ट के ऊपर भी है कि हम कितने पैसे लेके ट्रेड कर रहे हैं, तो कौन सा टाइम फ्रेम बेटर रहता है? ऐसा कुछ नहीं है? मैम ऐसा कुछ नहीं है, आपका मास्टरी कौन से सेटअप पे है वो ज्यादा मैटर करता है। आप कौन से सेटअप पे ज्यादा कंफर्टेबल हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर मैं इंट्राडे कर रहा हूँ, राइट, हाँ। तो इंट्राडे में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेडिंग बढ़ जाती है, हाँ। और जो स्टॉप लॉसेस और टारगेट जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। हम्म। ओके, और अगर लेट्स से कि मुझे पोजिशनल करना है, हम्म। तो मुझे थोड़े बड़े स्टॉप लॉसेस और बड़े टारगेट के साथ में जाना पड़ेगा। हम्म। ओके, तो आप किस में कंफर्टेबल हो। लेट्स से कि आपका कैपिटल साइज के ऊपर भी काफी सारी चीजें डिपेंड बिल्कुल होती है। सर। हम्म। ओके, तो अगर आपका कैपिटल साइज बड़ा है, हम्म। ओके, तो आप क्या कर सकते हो कि 80% आप पोजिशनल में कर सकते हो, 20% आप इंट्राडे में यूज कर सकते हम्म। हो। ओके, लेकिन अगर आपका कैपिटल साइज छोटा है, हम्म। तो फिर पोजिशनल में जाने में कुछ बनता नहीं है, क्योंकि वहां पे फिर आपको इतना, अगर आपको जल्दी कुछ ज्यादा रिटर्न बनाना है, हाँ। तो इंट्राडे में थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, आपको लेवरेजेस मिलते हैं। अच्छा। ओके, और पोजिशनल में क्या हो जाता है कि आपके फंड साइज के हिसाब से वो थोड़ा टाइम लेगा ग्रो होने के ओके। लिए। इवन जैसे वीकली में भी? अब वीकली में भी व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट, एक 3-4% हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक वीक हाँ। में, हाँ। है ना। 1 या 2 वीक में अगर लेट्स से यू हैव इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज, हम्म। so max to max it will give you a gain of 3 to 4 thousand rupees बिल्कुल सर। on the risk side of 2,000 rupees risk side, two हम्म। point five thousand risk side will be there. हम्म। So we will learn, ma'am, slowly, slowly. First, we ठीक। will learn the setup. So this is today is our very first setup only. So ठीक है by सर। this, it will be very early to say something. ठीक है सर। नहीं, मैं कुछ ऐसे याद नहीं कर रही हूँ, मैं बस आपसे पूछ रही थी कि क्या क्या। हाँ, नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप किस में कंफर्टेबल हो, वो भी बहुत चीजें मायने रखती ठीक है ना। है आपका अगर स्क्रीन टाइम है तो ही आप इंट्राडे कर सकते हो। लेट्स से इफ सर। यू आर हम्म। बिजी हम्म। ड्यूरिंग द डे टाइम, तो हम्म। इंट्राडे आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, देन इट विल हम्म। यू एंगेज। अगर आप पोजिशनल में जाते हो, सो यू विल बी फ्री टू डू द अदर थिंग्स एज वेल, हम्म। क्योंकि आपको बार बार तो देखना है मार्केट। आपको समझो पोजिशनल में है तो 2-3 घंटे में एक बार देखना है, या फिर आपको दिन में एक बार देखना है बस। हम्म। ठीक है सर। Just see 1 or 2 more examples I'm looking for. जैसे ये हिंदुस्तान यूनिलीवर, राइट, if we हम्म। can see, this has come to the weekly support zone over here. Okay, हम्म। at the same time it has come near the daily 30 level, correct. हम्म। Now the moment it will start trading near daily 30, what we will do, we will go to the H3 chart, and we will just see that whether the prices are closing above the H3 E6 and the RSI is also sustaining above signal line or no. हम्म। Okay, so if I see over here in this day, it has come and closed, right, हम्म। on 13th of August. RSI is also sustaining above signal line. So हम्म। now, what is the lowest point? This low, if you can see over here, what is the low is 247। 470, हम्म। right? That is the low. Okay. Now after that also the prices has collapsed, but it doesn't close below the low, right? हम्म। If the price close below the low, then we have to exit
from the next day, the stock started rallying, and then it is almost near the target. Correct. Yes. So we have to just identify such kind of stocks which are trading like this. If you see most of the FMCG stocks will be like that, because when the markets are falling, normally the FMCG stocks moving up. So if you see over here, when the in the Dabur the prices has reached to weekly E6 here, right? That is on 25th of July week. And if you see, this was the day where it has started on 28th of July. So 20th of July, if you go over here and you will select the H3 chart, we have to just wait for the price to close above the H36 with RSI. Just a moment. Okay. This is the day. 28th of July. We can see the prices has closed Above H3. E6. What is the H36? Is 514. So whenever the prices will come to 514, see here the price who has 514. Here you can buy the recent low before the buy was this only. That is a 508. You buy at, let's say, 514 or 515, right? And the previous high of the weekly is your target. So high was the 536, and here it has given a target over here, Yes. the 547, right? So likewise, we have to scan the things. Slowly we'll understand about it. I hope that today you have just, at least in a brief, you have understood that how we supposed to go for a setup, Yes. what are the things we have to look for, right? And which signals we will be following for, that will be sure. Okay. Okay. Okay, ma'am, then we'll stop over here for today. And Okay. on Thursday, we'll be learning a new strategy. Okay, sir. Okay, ma'am. Thank you. Yeah.